क्वेश्चन से शुरू करते हैं. अगेन इट्स नॉट a very complex question, but I want you to think about it. अपने फ्यूचर को लेकर, let's say next 5 years, 10 years, 15 years, या और भी आगे जाना है तो, बट अपने फ्यूचर को लेके क्या आप एक्साइटेड हो या फिर आप नर्वस हो कि पता नहीं कैसे जॉब मिलेगी या पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. आप नर्वस हो, एक्साइटेड हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है? और अगर बोथ है तो कितने परसेंट एक्साइटेड, कितने परसेंट नर्वस? एक तरह का एक रफ एस्टिमेट दो मुझे. सो आई एम जस्ट वांटिंग टू नो आपको कैसे लगता है अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और क्यों. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है. सो लेट मी स्टार्ट विद तन्मय. Hello, am I audible? Yes, Tanmay, I can hear you. So I am more of like 60-40%. Like I am 60% nervous, 40% excited about my future and how it's gonna be. Okay. That's my take on the question. Okay, and why? Why? Because in current competitive market, the market is currently not so good because my placement will be next year, and I currently we are suffering a very bad situation here because of COVID. A lot Okay. of companies have stopped coming, so nervous because of that. Excited because I'll be going out in the field to do something Okay. which will affect someone. Okay. I hope in a positive way. All right. So let me ask Sonam. Okay, when it comes to future, I am neither nervous nor I'm too excited. I am just trying to live in present and enjoy my each day. Okay. I am just planning for my day, enjoying my day. I'm not thinking too much about the future. Wow. That is a good way to live, but it's also an interesting way to look at things. Thank you so much. Next, Thank you. Next I have is Namita. नमिता, आपको क्या लगता है? I'm excited for my future. 100% excited? Yeah, because if we think positive, everything will go positive, right? If from now only if we are nervous, then things may go wrong, right? So I'm excited. Wow. See, you see how perspective change when somebody is at a young age. Like Namita is just in 10th class, which is great that she is attending all these classes. 10th class में है तो उसका perspective देखो कितना excitement है, full of positivity. That's pretty interesting. Yeah, I agree, Sumi. She's just in 10th class and I've crossed 3 decades now and I'm like, there's no future. It's all present now. Correct. Let me ask Devesh. I am super excited about my future. Okay. Because like currently I am in my dream job. तो मुझे कब से ही करना था like engineering second year से and based on what I'm doing currently मुझे लगता है कि मेरा future काफी अच्छा हो सकता है काफी. Okay, wonderful. That's also a very positive response that I got. Very exciting response. Let me ask Lakshmikant. Hi, Via. I'm also equally excited about my future, and there's no reason that I should not be. Because now being nervous about the future. Sorry. Bhaiya? Yeah. Okay. Sorry, so being nervous about future won't. Being nervous for my future won't do any good to me. It's just that excitement will pull me towards like more like I'll be welcoming all the challenges that come on my way on the future, and I'll. Okay. All right. That's I'll also face a them. good point. I'll face them. Yeah.
and Okay. being like excited is the only option I will give myself. That's it. Okay. All right. Let me ask last but not the least, Tulika. So I am equal parts nervous as well as equal parts excited, and that goes not just for my distant future but also what each day is throwing at me actually, because there are new challenges, new subjects, new opportunities every day coming my way. So all of this makes me very excited, but sometimes I'm also nervous as to how I will approach this thing, or will I be able to do it correctly or not. So it's kind of both. Mix of both. Okay, wonderful. All right, thank you so much, guys, for your opinions and for your views. The reason for this question is just for you guys to think कि सोचो कि कैसे लाइफ जा रही है, क्योंकि एवरीडे कोई नहीं सोचता है बैठ के कि अच्छा मैं एक्साइटेड हूँ, क्या मैं नर्वस हूँ. It's just something we feel, and why we feel in certain way. और समटाइम्स लाइफ में अच्छे फेस रहते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम, और कभी अच्छे फेस नहीं रहते हैं तो हम ज्यादा नर्वस रहते हैं, विच इज फाइन. बट द ओनली पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू गेट एन आइडिया कि आप कैसे सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में. समथिंग विच नोबडी कैन से कैसे रहेगा, समथिंग विच नोबडी नोस कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा. और बहुत लोग कुछ सोचते नहीं है फिर भी बहुत कुछ होता है, बहुत बार बहुत कुछ सोचा कुछ नहीं होता है. It all depends, but the outlook is important, which I find is very positive in this group. So that's great to know. And today's topic is actually about youth. Youth is youth ऐसे कोई as a teenage नहीं है. I'm not talking about 13 to 20 group people. We're talking in general about people जो एक तरह से young age में है. Like we can say below 30s, we can say below 40s also. But definitely at an age where they are able to put a lot of time, energy, और एक तरह से वो फिट है अपने करियर में या फिर अपने लाइफ में कोई भी गोल परस्यू करने के लिए. ओके. और ये एक्चुअली बहुत ही स्पेक्टेकुलर टाइम ऑफ लाइफ है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत छोटे जब रहते हैं कुछ समझ नहीं आता है, हमें कुछ पता नहीं रहता है, वी आर जस्ट टू यंग, ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, खेल खेल में टाइम निकल जाता है. और अगर ओल्ड एज में देखते हैं तो वहाँ पे एक तरह का डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बट यूथ इज एन एज ग्रुप वेयर यू कैन एक्चुअली डू मोर स्टफ. ओके. एंड इन रियलिटी एज इज जस्ट अ नंबर बोलते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. एज इज मच मोर देन अ नंबर. एज के साथ साथ बहुत चीजें बदल जाती है. तो इसके लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको बोलते हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. क्यों? क्योंकि वो कैसे रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा कंट्री कैसे रहेगा. वो कैसे चीजों को लेंगे, वो कैसे अप्रोच करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उस हिसाब से कंट्री डिफाइन होगी. ओके. बहुत बार देखने में आता है कि बहुत जो कंट्रीज बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे जो यंगस्टर्स है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. इसके लिए इन अ वे कंट्री अच्छा कर रही है. Okay, and what is the power of youth? The power का physics का definition है the ability to do work in a certain time. So power of youth का मतलब क्या है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं इस एज में. We can do a lot of work. कुछ भी हो, बहुत पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बहुत काम करना है तो काम कर सकते हैं, बहुत आपको खेलना है तो बहुत खेल भी सकते हो. जो भी है you can do in a lot of quantity. Okay. एंड यूथ जो यंग एज है उसका एक एडवांटेज है. तो मैं इन जनरल अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो आई वुड से लेट्स से फ्रॉम 12-13 years to let's say late 30s. Let's say this group we are talking about, or maybe early 30s. But the advantage of youth is this. Number one thing is they have time. Let's say if you are just starting in your career और आप पढ़ रहे हो या आप करियर में स्टार्ट कर रहे हो, कुछ साल ही हो गए, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आपके पास बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं रहेंगी जिसके बारे में आपको ध्यान देना है या आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द हैंड्स. एंड सेकेंड इज देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी. बहुत एनर्जी है कुछ भी करने के लिए हमारे पास. सपोज आज कहीं खेलने जाना है, इंस्टेंटली खेलने जा सकते हैं. आज कुछ
पढ़ना है इंस्टेंटली बैठ के पढ़ सकते हैं. So we have a lot of energy also, and there is a lot of optimism. Optimism means generally youngsters are much more optimistic about life than older people. Means वो लाइफ को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली लेंगे, चीजों को पॉजिटिवली लेंगे, एंड दे हैव दिस एनर्जी जिससे वो आराम से चीजों को टैकल कर सकते हैं. ओके, एंड यूथ आल्सो हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. नाउ आई एम जस्ट जनरलाइजिंग इट, बट यंगस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम ऑफ द फ्यूचर कि मेरा फ्यूचर ऐसे रहेगा, या फिर मैं ऐसे करूंगा, या मैं कोई दिन ये बनूंगा, ये करूंगी, जो भी है. दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स अबाउट मेनी थिंग्स कि मेरा पार्टनर ऐसे रहेगा, या मेरा ड्रीम जॉब ऐसे रहेगा, मेरा घर ऐसे रहेगा. दे आर लॉट ऑफ ड्रीम्स in for that youngsters have. And health, unless कोई major issue है, health आपका साथ देती है. When you are in young age, you tend to be much healthier than when you go in older age, जहाँ पे बहुत सारे तरह की चीजें आ सकती है. So in young you also have health. बहुत बार ये इग्नोर रहता है क्योंकि जब तक कोई बीमारी नहीं है हेल्थ का पता नहीं रहता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. बट हेल्थ इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपका कितने भी अच्छे इंटेंशन हो, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि हर बार वो आपको इश्यूज दे सकती है. बट इन यंग एज health is on your side. Most of the times you will be fit, you will be fine, or you will be healthy enough to do the work. Okay, and sixth is explore. You can actually explore a lot. Like for example, people who are doing engineering, who are studying, let's say less than engineering, और जो भी लोग करियर में भी नए हैं, they can explore a lot. अब चाहे जो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, चाहे जो मतलब चीजों में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो जगह पे जा सकते हैं, जो चाहे वो कोर्स ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, तरह तरह के एडवेंचर कर सकते हैं, जो कि ओल्डर एज में इतना आपको पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव लाइक अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और मे बी इतना एनर्जी भी नहीं रहता है, इतना मोटिवेशन भी नहीं रहता है. So these are some very very major advantage of being a youngster, which almost all of us are. So I just wanted to have a brief points on that. But advantage के साथ disadvantage भी साथ रहता है. It's like a coin, heads and tails जैसा. So there are also disadvantages of being like of being young and with high energy and everything. Number one which I see is casual. बहुत लोग बहुत कैजुअल है अपने लाइफ के बारे में. कैजुअल मीनिंग नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी दे डोंट हैव मच plans, they don't have not just plans, but they are very casual in their approach. किसी चीज के बारे में इतना सीरियसनेस नहीं है. फॉर एग्जांपल, पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, पास करना है डिस्टिंक्शन से, ठीक है पास करना है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पढ़ जा, पास तो पास, फेल तो फेल. मीन्स दे आर वेरी वेरी कैजुअल इन अ वे दैट दे आर अनअटैच्ड टू देयर डेस्टिनी, कि ठीक है जो है देखते हैं, बाद में देखेंगे. सो पीपल कैन गेट बिट कैजुअल जब वो यंग रहते हैं तब. और बहुत बार देखने में आता है कि दे आर ऑल्सो वेरी इनडिसिप्लिन. इनडिसिप्लिन मीनिंग, अभी अगर कोई एक ओल्डर एज का पर्सन, अगर मैं संस्कृत में देखता हूँ, मेरे क्लासेस में देखता हूँ, तो जो एल्डर पर्सन है, जो इंटरेस्ट से आते हैं, उनको सीखना इससे आते हैं, वो लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं. दे वांट टू डू इट, दे विल डू इट. बट व्हेन पीपल आर यंग, उनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं. कोई दिन आया, कोई दिन नहीं आया, किसी दिन हुआ, किसी दिन नहीं हुआ. मीन्स दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट. ओके, एंड इट कैन हैपन. It's not something it has to be there, but I'm just saying हो सकता है ऐसे सब. And third, inexperience. Experience नहीं रहता है चीजों के बारे में, या फिर लाइफ इतना देखा नहीं है तो इतना पता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सीखने में टाइम लगता है. सो वो एक तरह का आपको डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि इफ यू हैव द एक्सपीरियंस अर्ली, देन यू कैन एक्चुअली यूज इट फॉर योर बेनिफिट. ओके, एंड बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों, जब मैं भी बड़ा हो रहा था, वी डोंट हैव अ सर्टेन डायरेक्शन कि 5 years डाउन द लाइन वो क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तो अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू 5 years के बाद आप कैसे देखते हो, 10 years के बाद कैसे देखते हो. मैं तो कभी नहीं देखता था अपने आप को कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा. आई यूज्ड टू जस्ट थिंक ओके कुछ अच्छा करूंगा. अगेन नथिंग क्लियर,
नथिंग वेरी प्रिसाइज, कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है स्पेसिफिक. सो देयर इज अ जनरल लैक ऑफ डायरेक्शन जो देखने में मिलता है. And because of that, you almost like end up being where somewhere else, something just happened to you and you are there. Okay, अगर हम खुद से कुछ गोल रखते हैं, खुद से कुछ हम एम रखते हैं, then we are moving towards that destiny intentionally. But अगर कोई गोल नहीं है, एम नहीं है, तो then life will happen to us. It will happen to everybody. It will happen to us also. Okay, nothing wrong. I'm just saying this is the two different ways how things can go. And also many people feel there's nobody to guide them, which is a very tricky thing, because है तो बहुत कुछ resources, but they don't feel there's anybody to help them out. Like मुझे क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए. और बहुत बार इंडिया में बोलते पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर जाके वो सोचते हैं कि करना क्या है. So this is nothing new, but it's very interesting कि कोई गाइड करने के लिए नहीं है. अभी जो पढ़े लिखे फैमिलीज हैं उनमें तो भी लोग हैं जो बोलेंगे ठीक है इसका स्कोप अच्छा है, उसका स्कोप अच्छा है. बट इन मेनी फैमिलीज अगर किसी को आइडिया नहीं है तो जी जस्ट टेक समथिंग बिकॉज देयर फ्रेंड्स टुक इट, या तो फिर इट्स कॉलेज पास में है तो वो कॉलेज ले लेंगे, या फिर ये कोर्स ऐसा सब इजी है तो मैं ले रहा हूँ. तो देयर इज नोबडी टू गाइड in lot of cases. And like I said, not focus means you don't have that sharp focus कि मुझे चाहिए, मुझे करना है. Not for everybody. Many people are actually very focused. But I'm just saying about generally कि बहुत सारे लोग focus नहीं रहते कि अरे ये चाहिए तो इसके लिए efforts करना है या इसके लिए consistently कुछ चाहिए. Okay. And many people also have shortcut mentality कि हर चीज हो सके जितना short way में करना है. और ओके मुझे एग्जाम में पढ़ना है तो कौन से मिनिमम चैप्टर्स पढ़ने से मुझे मार्क्स आ जाएंगे. सो वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट, इवन आई हैव बीन थ्रू दैट कि अगर पढ़ ही रहा हूँ मैं एक हफ्ता, तो एक हफ्ते में जितना टाइम है उतना ही अगर पढ़ना है तो पूरा तो नहीं पढ़ सकता हूँ. तो हो सके जितना मिनिमम कौन सा पढ़ूंगा, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ही ध्यान दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दूंगा. राइट. तो एक तरह का तो पता नहीं था कि ये कैसे लाइफ में बहुत कैरी फॉरवर्ड होता है. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टडीज, इट विल कैरी फॉरवर्ड इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, एंड इट विल लिटरली आई कैन सी इट वुड हॉन्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब मैं फटाफट ऐसे फास्ट पढ़ लेता था, मेन पॉइंट्स क्या है, मेन क्या है, और फिर वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता था. एंड देन आई हैव टू गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. 2-3 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम भी लगता था, बट सेकेंड वे में एक हैबिट हो गई थी, तो कुछ भी चीजें फास्ट पढ़ना है तो याद नहीं रहता इतना. So after long time I had to rectify it. But I'm saying कि ये जल्दी करने का जो मेरा मेथड था, it backfired in some way. And we also say one more disadvantage is because there's so much time, there's also a scope of wasting a lot of time. So we see a lot of people can actually spend more time in unnecessary things. एक टाइम तक ठीक है, बट इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन दैट देन यू शुड, देन एक तरह का वो वेस्ट है, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली आपका उस टाइम जो प्रीशियस टाइम था वो चला गया, और बाद में रियलाइज होने से उसका ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि द टाइम इज गॉन. ओके, so we can also waste a lot of time. These are some disadvantages in general of being a youngster, and we also saw what are the advantages. So both sides I have presented कि क्या advantage है, क्या disadvantage है. And many people, like I say, they feel youth is power, like they actually feel the power कि yes I am going to do something, मैं कुछ करूँगा, मैं वर्ल्ड को चेंज करूंगा, या मेरे फैमिली को चेंज करूंगा, मेरे सोसाइटी को चेंज करूंगा, या फिर मैं अपने लिए कुछ करूंगा. बहुत लोग ऐसे पॉजिटिवली भी देखते हैं, और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली में काफी नर्वस भी रहते हैं कि मेरा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. राइट. और इट्स लाइक अ क्लासिक सिनेरियो जहाँ एक साइड लोगों को पता नहीं है क्या करना है, बट अदर साइड में दे ऑल्सो डोंट लाइक टू बी टोल्ड कि ये करो, क्योंकि खुद से करना है. तो दोनों साइड का जो व्यू है उसकी वजह से बहुत बार इनर्शिया में रहते हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि उनको एक तो पता नहीं है क्या करना है, बट कोई बोला वो भी नहीं करना है. सो इट्स लाइक
इट्स लाइक मिक्स, जहाँ पे वो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस सोचेंगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और ऐसे बहुत साल बिता सकते हैं लोग, नॉट जस्ट डेज, बहुत सारा टाइम निकल सकता है कि अच्छा मुझे क्या करना है, क्या करना है। ओके, सो बी केयरफुल इन योर अप्रोच। आई एम नॉट सेइंग वन इज करेक्ट देन अदर, बोथ इज नीडेड, दोनों चाहिए। कभी कभी सुन लेना बेटर है अपने टीचर्स का, या कोई फील्ड में वो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो उनका सुन लेना बेटर है, कभी कभी खुद से करना बेटर है। और it depends, but I'm just saying कि if you are stuck somewhere, I think this will be a mental block. Oops, sorry. So let's look at why being young is actually the best time in life. Because like I said, look at most of the entrepreneurs. अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग को देखेंगे जो बड़े बड़े कंपनीज शुरू किए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, नए नए चीज कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यंगस्टर्स है। नॉट ऑल द टाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे स्टार्ट अर्ली, नॉट लेट। बहुत कम कंपनीज है जो ऐसे फाउंडर से शुरू हुई है जो अपने 50s में, 60s में, 70s में, बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है या मोस्ट ऑफ द चीजें हैं, बिजनेसेस है, वो कब शुरू होती है, जब लोग अपने 20s में, 30s में, मे बी 40s में, राइट? सो दैट सेज कि इफ यू हैव टू स्टार्ट, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग समथिंग। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद तब नहीं शुरू होगा, होगा तो अभी होगा। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है कुछ करने के लिए, राइट? एंड लुक एट द डिस्ट्रप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे सोशल मीडिया एक तरह से रिवॉल्यूशन ले आया। पहले न्यूज़पेपर था, बट अब सोशल मीडिया से अवेयरनेस कितना बढ़ गया है। और जैसे आप देखोगे गूगल, टोटली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब ये वेबकैम, वीडियो कैमरा जो भी आप देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ बट इतनी दूर रह के भी आप सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन जो एक यंगस्टर कर सकता है, एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले लोग कर सकते हैं। दे कैन चेंज हाउ थिंग्स आर, ओके? एंड वन मोर थिंग इज, इट्स इजी टू फेल। इफ यू फेल, इट्स ओके। आपको इतना बड़ा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इफ यू फेल, दैट्स फाइन, यू कैन स्टिल गो फॉर मोर ऑप्शंस। यू डोंट हैव दैट मच प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है आपके सर पे। आप आराम से कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। नहीं वर्कआउट हुआ, देखो उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। बट अगर वो भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, एंड इंटरेस्ट भी नहीं है, तो देन यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स, बट यू कैन ट्राई। so this is a age to try things. And like I said, टाइम देना बहुत आसान है, क्योंकि टाइम हमारे पास है। हम चाहे जितना टाइम दे सकते हैं, दिन में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी हम दे सकते हैं। बट एक बार एक सर्टेन एज क्रॉस कर लिया तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है और इतना ज्यादा एनर्जी भी नहीं रहता है देने के लिए। So in reality, we are living like one of the best times of our lives, not just a good time. It's actually one of the best time to be in. Nobody talks about this, but I want to talk about this, and that is, the earlier you fail and learn and understand, the more successful you will be in later stages of life. So what it means is, जब आप यंग हो तब हर चीज को, जैसे हमने देखा, सक्सेस फेलियर पे मत देखो कि ये फेल हुआ, ये सक्सेस हुआ। मेरा गोल था, मुझे 1 लाख पर मंथ कुछ करना था, मैंने कर लिया, आई एम अ सक्सेस। और मेरा गोल था लेट्स से 50,000 करना था, मैंने बस 25,000 किया, आई एम अ फेलियर। या फिर मेरा गोल था एक स्टार्टअप करना था, बट वो प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आई एम अ फेलियर। डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट सक्सेस एंड फेलियर लाइक दैट। यू नेवर नो कहाँ की स्किल आपको कहाँ काम आएगी। यू नेवर नो आपने क्या शुरू किया हुआ, क्या उसमें सीखा हुआ, कहाँ आपको काम आएगा। So the earlier you actually do a lot of things, you go into this, you go into this, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें सीख रहे हो। जितने आपके पास स्किल सेट, एक्सपीरियंस, नॉलेज ये सब रहेगा, उतना ज्यादा आप अपने लेटर स्टेज में सक्सेसफुल हो पाओगे, उतना ज्यादा आप अपने लेटर स्टेजेस में उसको यूज कर पाओगे। अगर किसी के पास स्किल ही नहीं है, उसके पास पता ही नहीं है क्या करना है और इतना आइडिया ही नहीं है, तो फिर लेटर स्टेज में उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, and my simple advice would be this, like, this is something almost everybody can do, and it's just an advice. You can take it, you can ignore it, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मतलब, but मेरा
एक बहुत ही सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, अपार्ट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, जॉब, व्हाटएवर इट इज, जस्ट स्टार्ट सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, समथिंग जहां भी आपका इंटरेस्ट है। वो हॉबी है तो हॉबी, टीचिंग में है तो टीचिंग। एंड टीचिंग इज नॉट समथिंग वी डू जब हम बहुत एक्सपर्ट हो गए एक सब्जेक्ट में। टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा आपको पता है, और जो बच्चों को समझना है वो आपको पता है। इतना अगर आपको पता है तो आराम से टीच कर सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। इंजीनियरिंग में है तो 10-12 पढ़ा सकते हैं, और इंजीनियरिंग से आगे तो इंजीनियरिंग में पढ़ा सकते हैं, 4th ईयर में तो 3rd ईयर पढ़ा सकते हैं। जो भी हो, आप अगर आपको कुछ पता है तो आप उसको दूसरों को दे सकते हो वो नॉलेज। एंड doesn't mean everybody is looking for best, like you don't have to be the best. किसी को हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट सही में बहुत टफ लग रहा है, बट आपको ये आसान लग रहा है। हो सकता है आप उसको पढ़ाओगे तो वो उसको एक नया रिविलेशन देगा। ओके, सो टीचिंग इज अ ब्यूटीफुल वे टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई वुड रिकमेंड टीचिंग। बट टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोडिंग कर लो। अगर टेक्निकल हो कोई तो कोई कोडिंग सीख लो। और कोडिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको, हम देखते हैं कि आज के वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत कम आएगा। तो इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर आप करोगे तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा। एंड थर्ड इज मेडिटेशन। आई थिंक इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगेन बिकॉज ये करिकुलम में नहीं है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी यू हैव टू डू। अगर स्कूल्स बोलते कंपल्सरी आधा घंटा करना है तो अलग बात है, बट ये चॉइस पे है। और जहाँ पे भी चॉइस आता है वहां पे until unless you really want, you will not do it. So I would say add it a part of your life if you're not done it. Again, a great way to explore yourself, how you can कैसे आपको और ज्यादा अपने बारे में पता चलेगा, आपके डर क्या है, आपके कॉन्फिडेंस पॉइंट्स क्या है, आपके एम क्या है, सबके बारे में आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस आएगी मेडिटेशन से। और बस नाम पता है, कैसे करना पता है, इसका मतलब ये नहीं है आपको ये इसका पावर आ गया। Until unless we do, there is no power in knowing it. Okay, and if not, there's hobby. Take some hobby, whatever the hobby is, take some hobby. और आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें थोड़ा डायरेक्शन जाइए, थोड़ी दूर जाइए, देखिए क्या कर सकते हो उसमें। ओके, डू समथिंग मोर देन द डेली रूटीन। नहीं तो टाइम तो ऐसे ही जा ही रहा है, वो चला जाएगा। और कुछ नहीं कर रहे हैं तो टीवी में जाएगा, शोज में जाएगा, चैटिंग में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, बट टाइम तो जाएगा ही। So rather than that, if you do something, it's more worthwhile, more making more use of your time. Okay, and then there's also business. You can start business. You can actually start business. You don't have to. आपको इतना सब खत्म करके शुरू करने की जरूरत नहीं है। You can actually start any business जहाँ पे बहुत easy है। जैसे मैं बोलता हूँ, teaching is a very very easy thing to do. You can teach for free, or you can teach for some money. Nothing wrong in both. But that way you will actually start understanding money, you will start understanding lot of things. So you can start doing some business जिसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आए और उससे आपको सीखने मिलेगा। or if nothing, you can go to some NGO, right? So do some, at least one thing, start some extracurricular activity, because उससे आपके contacts बढ़ेंगे, आपका सोच बढ़ेगी, आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो बढ़ेंगे। तो इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड दिस इज समथिंग इजी टू डू। इट्स नॉट समथिंग कोई आपको फोर्स कर रहा है, इट्स नॉट समथिंग कि आपको इंटरेस्ट नहीं है वो करने बोल रहे हैं कोई। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो इसमें अच्छा लगता है करना, वो ही करिए, बट डू समथिंग। ओके, एंड आई वुड से दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट आई शुडंट हैव डन, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। बाद में का जो कॉन्सेप्ट है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बाद में करने का जो है, वो लाइफ लॉन्ग एक तरह का बैटल है। बट और मैं उसको बोलता हूँ एक तरह का स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन है क्योंकि पॉइजन तो है ही, क्योंकि अगर आप बाद में कर रहे हो तो मेंटली वो बिल्ड होते रहता है। बट स्वीट क्यों है? क्योंकि उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि अच्छा है कि मैं बाद में कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कुछ और कर रहा हूँ। और मैं सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता था मेडिटेशन पे, मुझे बहुत पसंद भी था, बट वो बाद में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी नहीं शाम में नहीं रात में। आई यूज्ड टू डू अ लॉट
and it just built up negative energy in me because मुझे कुछ करना है but मैं कर नहीं रहा हूँ. Okay, and then finally when I made like a promised कि अब करना ही करना है, that's when I actually did for like 100 days continuously. So I would say for procrastination, it's a very very deadly thing. हर चीज आप कभी कभी टालना ठीक है, बट अगर आप हैबिट में हो गए हो तो वो हो सके जितना जल्दी आपको गेट rid करना है, आप यू हैव टू गेट rid of it as early as you can. Okay, or at least minimize it such that it doesn't cause you problems. Okay, and one important thing is don't put spirituality to old age. बहुत बार हम सबसे लास्ट धर्म को ही सबसे लास्ट में देते हैं. सबसे लास्ट हम अपने आप पे, मेडिटेशन पे या अपने धर्म पे, ध्यान पे, उसको ही सबसे ज्यादा लास्ट में देते हैं कि अभी अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, लेट मी डू इट इन ओल्ड एज, जब मेरे पास टाइम ही टाइम है या जब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए थोड़ी ना है ये. ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, बट इट्स एक्चुअली वेरी बिग मिस्टेक. वाई अ मिस्टेक? क्योंकि यंग एज में सब कुछ ज्यादा है आपके पास, एनर्जी है, इंथुसियाज्म है, बहुत सारा टाइम भी है और बहुत पॉजिटिव भी है लाइफ के बारे में. तो यंग एज इज द राइट एज व्हेन यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी अ लॉट, बिकॉज उससे क्या होगा, वो आपको काफी एरियाज में हेल्प करेगा. इफ यू पुट इट टू द लास्ट में आके तो एक तो बराबर से होगा भी नहीं, और हुआ तो भी you have less time then. You have less time to explore, you have less time to make use of it. But if you start early, जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम है आपके पास उसको एक्सप्लोर करने के लिए. Okay, so I think the one good way to do is, if procrastination नहीं हो रहा है तो you procrastinate about unproductive activities. जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज कोई मूवी देखना है तो मैं बाद में करता हूँ, और अब मेरी हैबिट बन चुकी है कि मूवी देखना है मतलब मैं बाय डिफॉल्ट बोलता हूँ बाद में, क्योंकि अभी मेरे पास ये है, वो है, ये काम है, वो काम है. So I found it interesting कि I was actually able to procrastinate about movies now. अब मूवी देखने में मुझे बहुत पुश लगता है, बहुत तरह का एक 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 तरह से बोलते हैं कि मैंने अब उसको दूर कर दिया है, अब मुझे डिजिटल मीडिया इतना अट्रैक्ट नहीं करता. तो I am still procrastinating, but it's in a good way. Okay, so that's just one example. So I just want you all to have a momentum shift, because if you ask this question to yourself, that's when you will have a big momentum shift, which I had. और इसका कोई age नहीं है. You can have it in 15, you can have it in 20, you can have it in 30, 40, whenever. But see, in life it's okay to enjoy sports, watch movies, spend time with friends, with family, play games, study. But is there more to life than this? क्या यही सब लाइफ है या और भी है लाइफ में? ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन जब आपको जब भी नेचुरली आएगा, दैट्स व्हेन यू विल हैव अ चेंज इन योर लाइफ, बिग चेंज. कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बस ये जॉब मिल जाए सब ठीक रहेगा, बस मुझे ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आई विल बी हैप्पी, बस मुझे इतने पैसे मिल जाए, आई विल बी हैप्पी, बस मुझे मेरी इसके साथ शादी हो जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी. बट इन रियलिटी इतने सबसे कुछ नहीं होता है. लाइफ इज ऑलवेज wanting more and more and more from inside. There is something that life is seeking. So when you ask this question to yourself, is there more to life than just all of these things? So you have to ask, and you have to grow with that question, but that is when you will see a big change. And being a youngster, this is a very very big question to ask, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, अभी तो लाइफ में हमको बहुत कुछ करना है. बट जब आप करोगे तब ये क्वेश्चन याद रखना कि there is much more than just outside things. Okay, I just want to quickly summarize about today's age. Why I think, personally believe, not just think, I personally believe कि हम एक बहुत golden age में है. एक ऐसा एज जहाँ पे लिटरली पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कोई टाइम नहीं था जिस टाइम पे हम हैं, जहाँ पे लेट्स से information is available readily for everybody of us, for you, for me. आज हमें कुछ भी चीज के बारे में information चाहिए, सीधा गूगल करो, मिल जाएगा. गूगल नहीं है तो भी बुक्स ऑर्डर करो, घर पे आ जाएंगे. बुक्स नहीं है तो भी कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन करो, घर पे आ जाएगा. ये सब भी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को ढूंढो जिसको उसके बारे में पता है, pay him some money, he or she will teach you, right?
इंफॉर्मेशन इतना इजीली एक्सेसिबल कभी नहीं था, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं था। और कुछ नहीं, अभी घर पे कंप्यूटर है, नेट है, उस पे सब कुछ आ जाता है, राइट? कैन यू बिलीव दिस? हाँ, कुछ भी आपको चाहिए जानना है, स्मार्टफोन है, जस्ट पिक अप योर स्मार्टफोन, जस्ट मेक सम कॉल्स और गूगल करो, मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन इतना फ्रीली अवेलेबल था ही नहीं, कभी नहीं था जितना आज के एज में, ओके? और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो एकलव्य है। तो वो एक बच्चा था जिसको सीखना था कि धनुर्विद्या सीखना था, कि मैं फॉर एग्जांपल एरोस कैसे चलाऊं, कैसे मैं शूट करूं एरो से। तो उसको धनुर्विद्या सीखना था और उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं था। जस्ट इमेजिन, अगर एकलव्य आज के एज में पैदा होता, वो तो एकदम खुश हो जाता कि आज उसको कोई सिखाने वाले की जरूरत ही नहीं है, ही कैन लर्न ऑन दिस ओन। क्या उसको सिर्फ क्या चाहिए? उसको बस इंटरेस्ट चाहिए, उस तरह का पैशन चाहिए, फोकस चाहिए, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली सीख जाएगा वो, ओके? बट दिस इज नॉट द केस ऑल द ह्यूमन टाइम। बहुत हजारों साल तक ऐसा नहीं था। वी वर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, वी वर डिपेंडेंट ऑन एक्सपर्ट्स, और वो चाहेंगे तो ही सिखाएंगे। वो जरूरी नहीं हम पैसे दे तो भी वो सिखाएंगे, उनका मन मर्जी है तो ही सिखाएंगे। और बहुत जगह सीखना है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस है, इन थाउजेंड्स ऑफ केसेस, राइट? सो वी आर नॉट इन दैट सिनेरियो। यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, वी कैन लर्न all the good things, all the bad things, everything we can learn in today's age, okay? And second beautiful thing about today's age is globalization. इतना वर्ल्ड एक्सेसिबल कभी था ही नहीं। ये तो एरोप्लेन्स आ गए तो इतना एक्सेसिबल हो गया कि अभी इंडिया से यूएस बस एक दिन में पहुंच जाओ आप। Just one day you are from one continent to totally different continent, and you can actually interact with people there, you can actually sell your products there. We are not, हम सिर्फ अपने एरिया में लिमिटेड नहीं है। पहले सपोज किसी को प्रोडक्ट्स बेचना है, किसी को अपना जैसे पढ़ाने में अच्छा है, उसको पढ़ाना है, तो स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? उसके घर के आसपास मिलेंगे, उसके जो एरिया उसके आसपास मिलेंगे। उससे दूर के स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो वो वहां पे आके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टेट के सब बच्चों को, अपने कंट्री के, वर्ल्ड के सब बच्चों को पढ़ा सकता है। सेम वे एज अ बिजनेसमैन, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो लोकली लेंगे लोग। कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री आके मेरा सामान लेगा बहुत कम होता है, वो भी सिर्फ एक्सोटिक प्रोडक्ट्स पे, वो भी जब शिप्स में आते थे तब, राइट? बट टुडेस एज इज नॉट लाइक दैट। आज हम इंडिया में बैठ के वर्ल्ड में कहीं पे भी हम कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं पे भी किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं, और कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड वी कैन हैव एन इम्पैक्ट टुडेस एज में, आज के एज में, ठीक है? तो दिस इज एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। So competition is not just internally, it's also with the world. But the good thing is you're not limited to your area. अगर आपके एरिया में 100 लोग ऐसे हैं जिनको let's say 100 लोगों के पास C++ का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वहां पे सीखने के लिए अगर लोग नहीं है let's say, कोई बात नहीं, आप बाहर के लोगों को सिखा सकते हो, right? So world is very accessible now, so that is a very good thing for our age. And third is technology. Look at the ancient technology, जहाँ पे पुराने टाइम में तो कुछ भी नहीं था, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उनके पास। राजा महाराजा लोगों के पास भी नहीं थी। सो इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी नहीं है, तब क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर लोगे, राइट? कुछ भी नहीं कर सकते, तरह तरह की चीजें जो हम कर सकते हैं, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी दूर हो, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हो, लेकिन वी आर कनेक्टेड इन एन इंस्टेंट। ऐसे कभी नहीं था। तो लोग को अगर बात करना है, कुछ भी करना है, वो चिट्ठियां लिखेंगे जो इतने सालों दिनों बाद जाएंगे, और देयर इज नो वे कि जाएगा ही जाएगा। और यू कैन नॉट स्पीक इन पर्सन, यू कैन नॉट सी इन पर्सन। अगर आप घर से दूर हो मतलब आप दूर हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, जान नहीं सकते कैसे। सो लुक एट टुडेस वर्ल्ड, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी वी नीडेड। ओके, आपको ये चाहिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी है। आपको मशीन्स चाहिए, तरह तरह के मशीन्स है। कुछ भी चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस टाइम में रह रहे हैं हम,
Okay, it's not the case all the time. And then we have groups. So very simple, आपको अगर हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट है, आप हॉर्स राइडिंग के ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सेम माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, आपको हॉर्स राइडिंग सीखना बहुत इजी पड़ेगा, फ्रेंड्स भी बन जाएंगे और कोई सिखाने वाले भी मिलेंगे। और लेट्स से आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आप ऐसे ग्रुप्स रहेंगे सब जगह जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, वीकेंड में वीकडे में जो भी है, you can join that group, you can learn it. Anything you want to learn, there are groups. So it's a like-minded people, एक साथ रह के ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो ग्रुप्स में आराम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? For example, even this yard class is a group. It's a group of people who want to, let's say, learn something. Okay? But हमेशा ऐसा तो नहीं था, बहुत for human beings, thousands and thousands and thousands of years, वो उनके पास ना ग्रुप्स थे, ना एजुकेशन था, ना ऐसा टाइम था कि जहाँ पे अगर मुझे कुछ सीखना है तो मेरे पास ग्रुप है, मेरे पास रिसोर्स है, कुछ भी नहीं है। हम अर्ली मैन को देखते हैं जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स था, उनको तो बस किसी तरह वो अपना खाना खाया है, अपना टाइम बिता लिया तो वो बहुत है, राइट? वी आर नॉट इन दैट एज, वी आर इन अ टोटली डिफरेंट एज, और हमारा जो एज है वो एक तरह से बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बस 300-400 साल पहले पैदा होते, शायद हुए भी होंगे हम सब, बट अगर 300-400 साल पहले पैदा होते तो ये सब चीजें नहीं है, ना इंफॉर्मेशन इतना फ्री अवेलेबल है, ना ग्लोबलाइजेशन है, ना टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप ये सब कर सकते हो, और ना ग्रुप्स इतने कन्वीनियंट है कि बहुत इजीली आपको सब कुछ हो जाए, राइट? सो दैट्स व्हाई टुडेस एज इज नॉट गोल्डन, इट्स लाइक अ डायमंड एज। इतना आपके पास फैसिलिटीज रह के, इतना सब रह के, the only question is this: will we as a person, as an individual, will we be among the group of people who will make use of all this opportunity, or will be among a group of people who will say these times are very tough, everything is so hard, ये लाइफ में बहुत बहुत मुश्किल है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास बहुत ही मुश्किल है। दिस इज द बिग क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल तो रहेंगे जो इसको अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और वो अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे, अपनी लाइफ आराम से जिएंगे, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, और दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल मेक यूज ऑफ इट। द ओनली क्वेश्चन इज, क्या हमें वो ग्रुप में ज्वाइन करना है, या हमें वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स बनना है जो ये सब को समझ के, आज का जितना वैल्यू है उतने को समझ के वो आगे बढ़ेंगे, या फिर ऐसे ग्रुप में रहेंगे जो हर चीज को चैलेंज देखता है, हर चीज को ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, या ऐसे देखता है बहुत टफ हो गया है वर्ल्ड क्योंकि सब जगह बहुत कंपटीशन है। तो मैं देखता हूँ बहुत कॉमन एक तरह का बिहेवियर है, पैटर्न है, एंड द लाइफ रिफ्लेक्ट्स दैट, उनकी लाइफ वो रिफ्लेक्ट करती है, जो हमेशा ये सोचते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत टफ है, ये है वो है, उनकी लाइफ में आप देखोगे चीजें आसान नहीं है। उनको लगता है कि क्योंकि चीजें आसान नहीं, वो ऐसा सोच रहे हैं, बट उल्टा है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं उनके पास चीजें आसान नहीं है। और बहुत बार हम देखते हैं बहुत लोग की लाइफ में सब चीज आसानी से रहती है, थिंग्स आर ओके, प्रॉब्लम से तो भी ओवरकम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स उनके पास नहीं है, बट दे हैव डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। इफ यू थिंक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हेन यू कैन ग्रो। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन विल you'll think about this question कि क्या मुझे ऐसे ग्रुप में जाना है या फिर मुझे ऐसे ग्रुप में जाना है। कोई ना कोई दो में से एक ग्रुप में आप जाओगे ही जाओगे, बाय डिफॉल्ट फॉर श्योर। न्यूट्रल रहेंगे ऐसा नहीं होगा, या तो आप ऐसे ग्रुप में जाओगे जहाँ पे वो काफी पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं चीजों को, या तो आप ऐसे ग्रुप में जाओगे जहाँ पे वो बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है लाइफ के बारे में। ओके, so with this I want to conclude the class of Power of Youth, because this is really a very best time in our life to do something, and I hope कि ये क्लास में आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो और थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक मिला हो, but I just want somebody to summarize this. Okay, तो कौन summarize करेगा? कि क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, क्या क्या पॉइंट्स समझ में आए, क्या क्या पॉइंट्स something you want to discuss about this?
Come on, guys. Okay. Just या मुझे ना एक पॉइंट ऐड करना था. सो जो टॉपिक आज का था पावर ऑफ यूथ, उसमें काफी सारा पॉइंट्स ऐसे थे कि जो हम आज के लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में फेस कर रहे हैं. बट एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे आपने बोला कि 2 ग्रुप्स है, राइट? तो 2 ग्रुप्स में से अगर हम ये ग्रुप चुनना चाहते हैं जहाँ पे of course we have to take advantages of the time what we have right now. तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे रहते हैं जो हमें बोलेंगे कि अरे आगे की लाइफ बहुत बड़ी है, अभी ये देख लो, अभी वो कर लो, ये सब के लिए बाद में टाइम है. एंड स्पेशली एक पॉइंट मुझे ये ऐड करना था कि डोंट लेट योर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस यू. सो होता क्या है, आजकल पूरी दुनिया ब्लाइंडली है ना बस ट्रेंड को फॉलो कर रही है. और ये मैं अपने आसपास बहुत ज्यादा देख रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स में भी, कि जब भी मैं नॉर्मली कोई डिस्कशन करने भी जाती हूँ, लोगों को आजकल से एक ही चीज में इंटरेस्ट है. नेटफ्लिक्स पे क्या आ रहा है, प्राइम पे क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है. एंड देन आई फील लाइक ओके, आई हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है. बट देन डोंट लेट दैट फैक्टर अफेक्ट यू कि अरे यार हर कोई नेटफ्लिक्स में वो सीरीज देख रहा है, मैं नहीं देख रही हूँ, एंड आई डोंट नो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या. ठीक है, लेट मी ट्राई. एंड वंस यू गेट इनटू इट, फिर वो बिंज वॉचिंग के चक्कर में सीजन पे सीजन आते रहते हैं, एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू इट, और आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो. तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बेस्ट एडवांटेज ये है कि आजकल हर चीज ऑनलाइन है. लाइक आपको जो भी सीखना है, एवरीबडी हैज कम ऑनलाइन. पहले होता था कि टाइम नहीं मिल रहा है, वहां जा नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते. अब सब चीज ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन का जो टाइम है वो अच्छे चीज में डालने में ज्यादा सेंस है, रादर देन जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम. बुरी बात नहीं है देखना, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए जरूर देखना चाहिए, बट जस्ट ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ. एंड वो खुद आप अपने आप से अंदर से आएगा आपके. जस्ट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड कि सब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी करना चाहिए. डोंट गेट इनटू दैट रैट रेस. अपने लिए अपना एक स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, wonderful. That's a very, very good point. I think it's a great point क्योंकि आज के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत रिलेवेंट रहेगा. I'm glad you added that point, Apurva. Thank you. थैंक यू. Alright guys, I think मुझे पिकअप करना पड़ेगा. I don't like to do this क्योंकि मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है ये कुछ बोलने के लिए. Why not take it? एक ही पॉइंट से ही, 2 ही पॉइंट से, why not go for it, right? May I try? Yeah, sure, Tulika. Yeah. So, the starting of the session there, you mentioned about the advantages of youth as well as the disadvantages of youth. So, we all pretty much know the advantages all the time because people keep repeating them again and again. But what people don't realize that there are way too many setbacks also with all that energy and all that time, and not necessarily the youth is using that time productively into the things that they want to do. Like there is high amount of chances that somebody in his 30s will end up realizing that okay, what have I done with my life for the last 30 years. So this lack of focus and this lack of a goal and this lack of a approach towards something, that was the highlight for me of the disadvantage list. And that was also followed by various other examples, and which I found very informative to me, and personally I could relate to a lot of them. Like you mentioned that लोग इंजीनियर पहले बन जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब करना क्या है. So this is something very very common all around me, and I kind of see that how it's wrong. And the one more point that I would like to pick up is the point of spirituality, where you mentioned that don't leave it to the old age, because I have seen a lot of people not even caring about what life is all about, like what is the purpose and like how you should be living. They are very outward centered. They just react to whatever is happening to their outward surrounding. They necessarily don't have an inner drive or something like that. And by the time they kind of realize that
I have no purpose, I have no goal, I have no path, I don't even know who I am or why I exist. So it's pretty late by then. So that was something that I found very, very important in the today's class. So I guess that's all from my side. Okay, thank you so much. Again, a very beautiful summary. That's what I want to know. कौन से points अच्छे लगे, कौन से अच्छे नहीं लगे? Because मेरे point of view से हो सकता है कोई बहुत point मेरे को अच्छे लगे हैं, but आपके point of view से हो सकता है ऐसे points अच्छे लगे जिनको मैं इतना ज़्यादा seriously नहीं लिया हूँ, right? So it's interesting for me to understand your point of view. That's why I asked, okay? So that's very beautifully summarized, and it's actually very, very true in a lot of ways. कि हम स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखते हैं कि वो तो मतलब बूढ़े लोगों का है, या फिर वो ऐसे है कि लाइफ में जब सब हो गया, सब हासिल कर लिया, तब हम देखेंगे. Again, it's just a way, it's just one thought that is blocking your growth in a lot of ways. Okay, so beautifully presented. Because this is last class, maybe I'll push by five minutes maybe. So let me just get what Sonam thinks about this. He has interesting way of putting things. I think pretty much has been covered. I have nothing new points to put across for now. Okay. No, I like the way he had summarized things and picked up points which were very relative. There's like one point that I really liked is there is never too late to do anything. The right time is now. Anything that you feel you should be doing, start it now. There's never a tomorrow that is there. Okay, wonderful. Thank you so much. What about you, Namita? I just like to ask you. Actually, I'll just tell in one line. We are unique. No, wait. Just now I got it. Wait. Sure. Take your time. 2 minutes. Or 2 minutes. Let me just go ask somebody else, then I'll come to you. Okay. So let me ask Devesh. I'm sure he'll give you 2 minutes. Sorry, क्या? Can you just summarize? Yeah, Like what you like, what you didn't like. Yeah. मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये क्लास, क्योंकि मुझे लगा कि एक कॉल फॉर एक्शन है इसमें, कि नाउ इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो मैं बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, जैसे गिटार सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखना है, बट इट मेड मी रियलाइज कि हाँ अभी शुरू करना है मुझे, क्योंकि नाउ इज द टाइम आई हैव. Okay, very good. And any other point, or that's it? अभी के लिए तो इतना ही है मेरे पास तो. That's it. Okay, wonderful. Let me ask Tanmay before I go to Namita. What I found good about this lecture was the way we are not utilizing our full potential currently, because currently we have access to all the resources which we will be needing to do anything we want. Almost anything you can do, which is and it is available on the internet, but we are not utilizing our potential to the max so that we can maximize our productivity. We are like most of the time procrastinating or delaying stuff. That's my take on today's lecture. Thank you. So you're going to learn something new, huh? Yes. Okay. I'll ask Tulika to keep an eye on you. All right. Let me ask Namita. Yes, Namita, you can tell us. First of all, I liked. Means for me, the starting class was very much interesting because actually you told what is the truth of the life. And one more thing, when I would like to share one quote which I made just now. We should always we try to unique because we ourselves are unique. And one more thing is that the topic which you told that nobody talks about,
the earlier you fail and learn. It was somewhat related to the question you asked, because I related it with the question, because we should never think about past and just get means we should all, we should not we should even not even think about future. We should be in present. That will only make a future. That's it. Thank you. Got it. That's a great point. You have a unique way of putting things, you know. That's a very, very interesting way for me to look at it. And even I couldn't relate, but you could relate to the question, which is great. And you're saying it correctly. We should not be thinking about past, meaning we should not be influenced by our past failures, because failure anytime can turn into success. uh, because we failed whole our life doesn't mean we will fail in the next attempt also. If we get this, जब हमें समझ आएगा, that is when, you know, the world will be like an exciting place, because you're not in fear. हमें डर नहीं है, हमें बस हम अपनी life enjoy कर रहे हैं, right? So that's a very, very good point. I think let's ask Lakshmikant, a final candidate. Can I add one more thing? Everything is summarized actually. Wait a minute. So sorry. I think Namita wants to add something. I want to I want to the thing which you told. I just want to give an example for that. That you told now that we should always keep on trying. Even the famous scientist Albert no Thomas Edison, even he tried to make bulb for 100 times. Uh, he never stopped making. He just went on, and his 100th try was the successful. Means first all he had failed. He didn't give up. That's it. Wow. Okay. So one thing about that is you are telling it 100 times less, you know, it's actually 10,000 times. So 100 into 100 times. So he actually tried for 10,000 times. That's what I read. But it doesn't matter. The main thing is, I mean, it does matter 100 or 10,000 में बहुत फर्क है. But like you're saying, you can get success anytime. Like Namita is saying. Namita, I'm expecting more trials from you now, okay? I'm just kidding. Yeah, Lakshmikant. I think everything is Yes. summarized. There's no point that I because it is pretty ironical nowadays that we are having everything at the snap of our fingers, but we still are confined to some things that we are not able to do. That thing I think we should change, and as a youth, we should be, you know, should not be backing up ourselves with excuses, but focusing on more, you know, attempts and giving chances to ourselves only to improve day in day out. I think that is more important. See, as you told this, thank you so much. As you said this point, I just realized one thing. Look at this, right? We have all the information, but we are not making use of it in the way we should. Why? Why is a big question. Why? Number one thing, lack of goal, lack of any aim. That is, अगर ambition ही नहीं है तो वहीं पे रुक गए. कोई aim ही नहीं है, वहीं पे रुक गए. ओके, एम है, एम्बिशन है, चलो मुझे अच्छा सिंगर बनना है, कुछ भी एम्बिशन है, अच्छा मुझे कुछ भी बनना है, एम्बिशन आ गया है, वी डोंट ट्राई इट कि बाद में ट्राई करेंगे, अभी नहीं, बाद में, और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट चला जाता है. ओके, कोई बात नहीं, अगर आप अभी ट्राई कर रहे हो, you overcome that also, you tried now, instantly you will fail. That is the reality of life. We fail, and if we don't have a right perspective of failure, we will get stuck there. Okay, and many times we see failure as outside, कि वो बाहर कुछ हुआ इसलिए मैं फेल हुआ या फिर अच्छा नहीं हुआ. That's when we realize everything is controlled by thoughts and beliefs. So you work on the thoughts and beliefs, and that is when you will have a much better chance of succeeding. Okay, so we work on thoughts and beliefs, and then we fail again. Now what happens? Now let's say if we fail better, अगर कुछ और थोड़ा progress करके fail किया है, तो now we can try something else and see how it goes. Okay, now let's say we failed again and again, but finally we saw some success. Now when we saw some success, that's when we have to go aggressively at it. Okay, और success ऐसा कुछ day एक definition नहीं है, but आपको जो करना था वो कर रहे हो.
Now that is something, now you can think about being excited in life, you can get all the good things in life, and that is where this graph will come, momentum graph, कि स्टार्टिंग में तो सब बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सब कुछ इजी रहेगा. जैसे क्लासेस स्टार्टिंग में, आई एम प्रीटी श्योर जैसे मैं ले रहा था अभी मैं ले रहा हूँ, उसमें डिफरेंस है. एंड हाउ इज द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, राइट? So that's how you can relate all these concepts in your life, and you can say, wait a minute, if I want anything, agar mujhe kuch bhi chahiye, who is stopping it? I am only stopping it. Society is not stopping, everybody, nobody is stopping you. You are only stopping, and not just stopping, if you're not thinking also, you're not going in the direction. So that's how everything adds up. और इसलिए इतना कॉम्पैक्ट, इतने सारे चीजें के बारे में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, या आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना अच्छा नहीं है, कभी ना कभी तो हो जाएगा, बट आपके पास से टाइम चला जाएगा हाथ से. ओके, सो इसके लिए वी कंप्रेस सो मेनी टॉपिक्स, सो मेनी थिंग्स, बिकॉज everything will add up and it will give you a kind of personality where you are more confident now. Okay, and we saw how confidence affects day-to-day things, right? So with this, I would like to wind up the whole module of personality development, mindset development. After this, we'll have a 1 week gap, and